Hello and namaste and welcome to this special show, The Five Indian Americans. And आज का जो टॉपिक है बहुत ही केयरफुली चूज किया है. इस तरह का एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इट्स अ लाइव शो एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रॉम जयपुर डायलॉग्स विभूति झा जी, who is very famous also, and Sharad Mohan ji, famous author, and Sankrant Sanoji, from the founder and the founder of Garuda Prakashan. So thank you all for joining today's show. So पहला क्वेश्चन यही है आज कि अभी तो पूरा धमाल मच रहा है. विक्टोरिया न्यूलैंड चली गई है. क्यों डर के गई, क्यों गई, यूक्रेन वॉर की वजह से गई या किस लिए गई? So we need to know that, and also how does it impact America's wars? कोई भी शुरू कर सकता है. विभूति जी प्लीज. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा संक्रांत जी, चूंकि आज पहली बार वो एकदम शुरू से ओपनिंग बैट्समैन की तरह से आए हैं, तो उनको वही शुरू करें. मेरी तो इच्छा ही होगी. I cede my time to him today. Sure, I haven't studied Victoria Nuland in detail, so I only have a sort of superficial understanding of it. लेकिन basically वो hawkish interventionist रही है. Lot of regime change, back deals, very close to the Pakistani establishment also. So overall, from an India point of view, it's definitely a good news कि वो, that she's leaving. But I don't know how robust that is going to be, because I think she still has possibly either political ambitions or hoping to come back in a future dispensation. So I don't know also whether she's been forced out or whether she's just kind of quit on her own. Looks like there was some internal politics happening within the Biden administration where, उसको कुछ supersede कर दिया गया या ऐसा किया गया. So I think we need to know a little bit more of the backstory. But overall, I think from an India point of view, she was a hawk, and she was definitely not India's friend. So I think it's good news from that point of view. I would मैं इस बात पे सहमत हूँ कि इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसका जाना अच्छा है. लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, The Confessions of an Economic Hitman, तो वो विक्टोरिया न्यूलैंड जो है, उसका नाम विक्टर न्यूलैंड भी हो सकता था. तो मेरी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है ऑफ दी कंट्रीज, जो देशों का होता है कि हम किसी और को किस तरह से कंट्रोल और डोमिनेट करें. तो कहते हैं कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रोसेस का फॉल्ट लाइन क्या होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के माहिर होते हैं. जैसे फुटबॉल के गेम में स्ट्राइकर होता है, डिफेंडर होता है, गोलकीपर होता है. अपनी अपनी जगह पे सब बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं. तो जब आप डोमिनेट और कंट्रोल का खेल खेलते हैं, तो आपको खास तरह के लोग चाहिए उसके लिए, जो कि आपकी हर फॉल्ट लाइन को बिल्कुल बर्बरता से और क्रूरता से एक्सप्लॉइट कर सके. As simple as that. It's a mentality की बात है. It's like a hyena. It's like a pack of dogs. Lion hunts, but the pack of dogs eat the carcass. वो उस जाति को समझना बहुत जरूरी है. उस तरह के लोगों को समझना बहुत जरूरी है. विक्टोरिया न्यूलैंड वो उस तरह की प्राणी थी जो फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने में बड़े ही माहिर थे, और उन्होंने इस तरह से हमारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया. और अपने फॉल्ट लाइंस को किसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उन्होंने जैसे देखा, आपने शांतनु जी ने, संक्रांत जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान के समर्थक थे, तो उन्होंने इस बात को देखा कि ये लल्लू है, उसको पटाओ, भारत का विरोधी है, उसको चारा दो और वो अपना हमला करता रहेगा भारत पे. तो इस बात के हिसाब से इकोनॉमिक हिटमैन जो कहानी किताब है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, spend some money, whatever it is that there, $7, $8, $10, read that from the perspective of पूर्व पक्ष. क्योंकि अगर आप अपने दुश्मनों को नहीं जानेंगे, तो आप किस तरह से उसका विरोध करें,
किस तरह से उसके प्रतिकार, उसका किस तरह से प्रतिकार करें, आप नहीं जान पाएंगे। जिस तरह से आप बेसबॉल क्रिकेट बैट से नहीं खेल सकते हैं और अमेरिकन फुटबॉल आप सॉकर बॉल से नहीं खेल सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और विक्टोरिया न्यूलैंड गई हैं, जाने दीजिए, लेकिन हमें देखना है कि वदर अब दूसरा विक्टर आता है कि एलिजाबेथ न्यूलैंड आती है। हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे रोका जाए। कोई इसके लिए न्यूलैंड रिजाइन किए हैं, ये तो पॉलिटिकल ड्रामा होता है, नाम शब्दों का प्रयोग करके, रिजाइन, क्विट, फैमिली वेलफेयर। बट डू यू थिंक दैट अ पर्सन विद दिस माइंडसेट एट दैट रिलेटिवली यंगर एज, वो चुप बैठेगी क्या? अब किसका चारा खा के अब वो क्या करेगी, इसके लिए हमें चौकस रहना पड़ेगा। ये डमरू बजाने वाली का सिचुएशन नहीं है आज। नहीं, एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा ओपनिंग लाइन दिया है विभूति जी। तो थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि विक्टोरिया न्यूलैंड डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और इसका बहुत मेजर हैंड था यूक्रेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में। एंड शी वाज नोन एज द मदर ऑफ क्रिएटिंग वॉर्स, और बहुत तरह के वॉर्स किए, कोसोवो का सिचुएशन किया है उसने। एंड मैनी थिंग्स शी डिड विच इज अनएथिकल टू अ लार्ज एक्सटेंट, इंक्लूडिंग यूक्रेन का जो फेक इलेक्शन हुआ जहाँ पे जेलेंस्की इलेक्ट हुआ, वो भी इलेक्शन उसी ने ऑर्गेनाइज किया था, मीन्स मैनिपुलेट किया था। शरद जी, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत जोर जोर से। तो हर हर महादेव, हैप्पी हर महादेव। शिवरात्रि। और डमरू की बात विभूति जी ने बोली तो इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था कि मदारी कौन है, कौन नचा रहा है दुनिया को। सो वेल, अभी हम मेरे बाद देश जी आएंगे तो ही वुड बी हैविंग मोर chronological order of Miss Victoria Nuland's role. But the way I see is, I think a lot has been said when she was let go on March 5th, right? 5 days or 6 days before. Victoria Nuland, who is she? I think Aditya ji gave a brief introduction of her. Well, Victoria Nuland was she was part of the Russian empire where she grew. She was daughter of an Jewish father and a British mother, which is always very deadly combination. And she was following the American agenda, American party agenda, which is Democratic Party, and she was doing her job well. She served many presidents under during her long tenure, from Obama to I think even Bush, Clinton, and then Mr. Biden. See, so why she was let go, people will have multiple reasons, and since I think independently, my thought process is it's related to a religion. Okay, a Jewish lady driving a Christian world, being a head, trying to uh, muddle the water of the NATO countries. She wanted to become a NATO head, all those things. During her long tenure, she has even used the F word for European Union. She said that European Union is like she showed the middle finger. So all those things are definitely in the background. But one of the important thing which I feel is the very recent statement given by Pope, which is that Ukraine should show the white flag so that Russia and Ukraine war comes to an end. This is a very big statement. Pope will not make a statement without a research, without a 1 or 2 months of a sustained negotiation with all the head of the state of the European Union. And was that a reason why she was released from that position, because of her strong Jewish background and very aggressive leadership style? Maybe. I think that is one of the big reason, because from nowhere it came and she was let go. Russia, whether America is winning the war or losing the war, that I will leave to the expert. Aditya ji has a lot of insight into it. But so that is one point. The second point I feel from the Indian American perspective is, देखिए,
India has always been very pro to Israel and Jewish, right? We gave them the settlement long time back when world was still not aligned to their cause, right? But maximum damage which India has with as far as the foreign policy is concerned is by mostly the Jewish diplomats, whether it's Madam what's her name, Aldrin, Madeleine Albright. Madeleine Albright. She is a Jewish. Then comes Mr. Anthony Blinken, very good friend, very nice personality of Jai Shankar, but he's also a Jewish guy from Jewish background. And this lady, Victoria Nuland, had a Jewish father and a British mother. She did her PhD in Russian literature. So none of these Jewish people who are running the American state affairs are sympathetic to India. And then the question goes to such a great statecraft and a statesman like Jai Shankar. हम लोग कहीं फेल हो रहे हैं क्या? क्यों हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं ये कॉज? क्यों जो इजराइल एज अ कंट्री एंड इंडिया एज अ कंट्री इतना अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद जो इनके लोग बाहर हैं, दे आर नॉट taking a favorable line with India. So I will leave all these questions, and as we proceed, we'll have more discussion. So this was my opening statement, Aditya ji. Great. Desh Kapoor ji. Namaste. Finally good to come back. तो बहुत दिनों बाद शो हो रहा है हमारा, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, पूछ रहे थे लोग मेरे को। तो विभूति जी से मैंने पूछा, मैंने कहा विभूति जी कब करना है? विभूति जी ने फिर अपना पूरा टाइम स्केड्यूल पूरा चेंज करके टू अकोमोडेट दिस शो ही डिड दैट। थैंक यू विभूति जी फॉर डूइंग दैट। thank Everything you. for good friends and creating a good narrative. Yes. Yeah, again, it always feels good to be among friends. So Victoria Nuland, अच्छा, तो Victoria Nuland को I take it as a metaphor, not as a person. एकदम डीप थॉट में घुस गए देश कपूर जी अभी, हाँ पूरा। तो दी विक्टोरिया न्यूलैंड कहाँ से शुरू करो, किधर से डालो, किधर से करो? I know. तो विक्टोरिया न्यूलैंड का मैं एक मेटाफर की तरह देखता हूँ, as but not as a person itself, because I think if we look at her as a person, then we'll miss the point. And the point is that like nothing happens in a vacuum, right? And like everything that happens in a way that, you know, a lot of things have to come together. And when I say that, like what I mean is कि like इसको कहा जाता है कि ये यूक्रेन वॉर वगैरह में हमें इसका बहुत बड़ा हाथ था, पूरा उसने ऑर्केस्ट्रेट वहाँ किया था, पर वो एक कॉक थी in a big wheel, right? There was this paper by US Naval Postgraduate School, तो उसमें था कि जो money pump in किया गया, in fact there are not many you know people who really talk about it. एक वो John Mersheimer एक हैं professor हैं शिकागो के, University Chicago के. He's the only one who has given a different viewpoint from the rest of the people. कि US जो था, that US and NATO had a big role in Ukraine, right? It was not just one person. So in that sense, अगर मैं देखूं, तो वो जो मैं वो पेपर की बात कर रहा हूँ जो यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ने लिखा था, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बातें बोली थी कि यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड like millions of dollars through US aid, which was created as a front for CIA many years back. You know, I think it was during Nixon's time, you know, if I remember correctly. And then other organizations like Freedom House, Development Associates, Renaissance Foundation. Both Freedom House and Renaissance Foundation are by George Soros. So George Soros had a big role in that also. But again, he was doing what the larger establishment wanted to be done. It was not done कि न्यूलैंड ने एक दिन सोचा मेरे को ये काम करना है तो उसने कर दिया. ये एक बड़ा considered policy थी कि ये काम करना है. You know, when the whole you know deal was done with the Soviet Union,
And when like Yeltsin जो था, जब उसको वो बेवकूफ बनाया गया, तो उसमें और धीरे धीरे पुश किया गया नेटो को उस तरफ, which ultimately became the reason why Putin actually attacked. So if you look at this entire spectrum, right, the way it happened all the way to now, then there was always the intention कि यही करना है उनको. तो न्यूलैंड जो थी एक फुट सोल्जर थी who made it happen. And now I've come to a point where I believe कि इन लोगों की जो इंटेंशन होती है, the global north की जो इंटेंशन है, वो कभी सीधी नहीं होती. वो there is this like very nice saying that I actually used today in my newsletter just now, and let me just read it out. I think it's fantastic actually. It must be fantastic since you like your own writing as fantastic. We accept. No. वो like मेरी नहीं है. It's not my quote. मैंने किसी का quote वहाँ डाला था, तो वो quote ये कहता है. इसको सांत्वना देना बोलते हैं अपने आप को. सांत्वना. तो उसमें ये था quote: all utopias are dystopias. The term dystopia was coined by fools that believed a utopia can be functional. Good one. And there is no greater truth than that. Because हमेशा जैसे अभी आजकल the great reset की बात हो रही है, जिसपे मैंने actually आज का newsletter लिखा था. The great reset की जो बात हो रही है, that is being sold as the panacea for everything, right? But it is not. And everything around it points to like something else. When even the colonial powers gave freedom to Africa and the Asian countries, it was never a very clear freedom. It was always an embedded colonialism in everything, whether it was Africa given by France or England, or to Asia by England. It was always in that sense. So अगर वैसे देखें तो जो underlying जो मोजो है इन सबका, that is always control by overt or covert means. Now, Nuland was one of those people who was one of the foot soldiers, but she was not the entire establishment. तो विभूति जी, एक मैं आपके बोलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा. Please. कि the अमेरिकन जो वॉर इंडस्ट्री है, ये पूरा जो वॉर फेयर का इंडस्ट्री है अभी इस समय, it is designed to, it has to sustain a new wars in any way. शेयर प्राइसेस अगर आप देखेंगे फॉर द स्टॉक मार्केट्स में, द मोस्ट ऑफ दिस शेयर प्राइसेस गॉन अप ऑलमोस्ट लाइक 200% now, 200%, or and those are the only ones which are growing. So I don't think so it's going to end. What do you think, wars are going to increase or decrease right now? This is very important. War has been part of human history. और जैसे मैं देश जी की बात से पूरा सहमत हूँ, जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि कंट्रोल और डोमिनेशन की जब बात होती है ना, तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ऑलवेज ड्रिवन टू कंट्रोल एंड डोमिनेट. अब ये सोच लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने कुछ दिया, वो दिया इसलिए कि उसको यूज करना है. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडिया का ही, कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन को थोड़ी पॉलिटिकल आकांक्षा, एम्बिशंस दे. वो आज तक वो चल रही है. राहुल गांधी जो फॉल्ट लाइन है इंडिया का, वर्ण को कास्ट में परिवर्तित करके वो फॉल्ट लाइन को इतना डिवियस कर दिया है कि आज 2024 में भी वो कमबख्त कास्ट सेंसस की बात कर रहा है. सोचिए इस बात को. तो दिस इज अगेन, वो कहते नहीं है कि आई टोटली अग्री विथ देश जी, उन्होंने मेरे विचार से सहमति दी और मैं बड़ा इसके लिए बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि विक्टोरिया न्यूलैंड इज एन एंटिटी, वन ऑफ द मेनी सोल्जर्स ऑफ द regime to do a certain pre-established activity. As I said to you, हर बंदे का एक रोल होता है. तो विक्टोरिया न्यूलैंड गई, विक्टर न्यूलैंड आएंगे, और नहीं तो कोई जॉन अब्राहम आएगा. कौन, who knows who will come now to do that
carry that part. So my thing is that yes, war has been always an instrument of expansion and domination, control. That is a part of the human ambition. That's the saying goes that, it's very nicely said that the human mind is so wired for conflict that all that matters is whether you are supplying bullets or bandages or both. वही मेरी That's अगली where बुक the है human mind has been wired to that extent. So war is an instrument of peace. Think about that. Nuclear power, nuclear arsenal was considered to be a deterrent for war. I have participated in debate in my school days for this. Is the nuclear weapons deterrent for war? You know what is happening today. So I agree that the whoever might is right. You may talk of democracy, but जिसकी लाठी उसकी भैंस हमेशा सच रही है. That is the Sanatan principle that has never proven itself wrong. One of the interesting things the Vibhuti worth talking about is कि war has definitely been a part of the human landscape. लेकिन what is very fascinating about how the US has gone about it is कि जो narrative war है वो war को precede करता है. Correct. यानी कि the whole thing is operationalized as a narrative war. So आपने एक चोला पहन रखा है कि ये तो हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, ये तो हम ह्यूमन राइट्स के लिए कर रहे हैं. Correct. और आज की दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स रिजीम है वो that has been operationalized. It's a weaponized system where you weaponize the human rights regime as a means for your political military intervention. So लिबिया के अंदर इन्होंने क्या किया, लिबिया के अंदर इन्होंने गद्दाफी को निकाला क्योंकि गद्दाफी was a challenge to the he was a possible challenge where he was thinking of launching an African currency based on the gold reserves, right? But that's not what they talk about. वो हिलरी क्लिंटन के लीक्ड केबल्स में आया कि एक्चुअली में फ्रांस और हिलरी क्लिंटन के बीच में क्या बातचीत हो रही थी, लेकिन दुनिया को क्या बताया कि गद्दाफी कितना क्रूर है, अपने ही लोगों के ऊपर कुछ अस्त्र चला रहा है, अब हमको जाकर लिबियंस की मदद करनी पड़ेगी. अभी इतने साल उनको लिबियंस की मदद करने की सूझी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने गद्दाफी ने कहा कि मैं गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर एक करेंसी लॉन्च करूंगा, तभी उनको लिबियंस की मदद की बहुत याद आ गई. तो वही दैट स्ट्रैटेजी, ये जो जैसे कि ना एनजीओज आर दिस ह्यूमन राइट्स एनजीओज आर पार्ट ऑफ द वॉर मशीन. और ये बहुत मजेदार बात है बिकॉज इट हार्कन्स बैक टू द चर्च. एक्चुअली if you look at how the Roman Empire used the church was the arm of the sort of armed forces. So there was the military and there was the church, and they worked in parallel. In fact, if you look at the Roman church, their titles, also the deacon and all of this, they follow as a parallel to the Roman army titles. That's right. Absolutely. So there was a whole structure that paralleled the Roman army, which was the structure of the church. तो आज वो चर्च के स्ट्रक्चर को इन्होंने एनजीओस के स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया है. there's the IMF, there's the rating agencies, there is the NGOs. All of that are the parallel power structure that work to take forward the military objectives and the economic objectives of the big powers. Every Catholic leader carried a sword and a Bible. Yeah. So he was a warrior as well as those they used to call them friars, and the friars were the warriors actually, and so like हमारा Junipero Serra, people call him big names, and I call him the terrorist because he's the one responsible for 21 California missions, or what they have killed, how many Native Americans they have killed. And the only people who were enslaved by them worshipped them because they were scared of their life. This was the whole thing about it, before. And that's why people losing trust over there. शरद जी थोड़ा इसमें एक भी चीज तड़का और ऐड करिए. एक तड़का है कि she is responsible for failure of UN? See, so let me read a small 4-5 lines from Search.
So the problem where what we are trying to address, and we don't probably most of us don't understand, is कि US का foreign policy क्या है. Foreign policy cannot be changed by individual unless and until we understand कि US का what is the US foreign policy. हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे. यूएस का फॉरेन पॉलिसी बहुत ही क्लियर है और एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, promoting freedom and democracy, protecting human rights around the world are central to US foreign policy. ये इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है, राइट. और उसके लिए उन्होंने ये भी लिखा है कि the tools to advance the freedom will be multilateral diplomacy, multilateral democracy, support for defenders of freedom. So इसको मार्क कीजिए, सपोर्ट फॉर डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम में वो सारे ऑटोक्रेट मिलिट्री रूलर्स को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये इनका टूल है, ये ऑफिशियली लिखा हुआ है. बट शरद जी, फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? मतलब इन्होंने तो मैं आ रहा हूँ, एंग्लो सैक्सन सेटलर्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट फ्रीडम दिया था. बाकी का बात नहीं हुआ. फॉरेन असिस्टेंट, आउटरीच, पब्लिक आउटरीच, एंड लास्ट इज द इकोनॉमिक सैंक्शन. और आप देखिएगा कि ये जो 5 टूल इनका डिफाइंड है, इसी में वो खेलते हैं. यूएस, टू अंडरस्टैंड यूएस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से ये व्यू आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन रूल करता है. जहां तक अमेरिका है तो आदित्य जी, अमेरिका स्टिल इज अ एंग्लो सैक्सन कंट्री. दैट्स हाउ इट वाज मेड. लाख हम लोग कह ले, तड़प ले कि भाई इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स. आप इमिग्रेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कलर है. अरे भगवान ने आपका मेलानिन पिगमेंट में कुछ डिफरेंट गुण दिया है, एट्रीब्यूट दिया है. तो we have to understand that till we are into that decision making role, right? We saw how Vivek Ramaswamy, in spite of most of the Republican accepting कि उसके पास सारा talent है, he speaks well, उसके पास fresh ideas है, but उस कभी भी डबल फिगर में उसको वोट नहीं मिला. Even in primaries he was still in a single digit, 8-9% I think max गया होगा. So we have to understand this reality. We have not risen to a level where we can start playing the game. I think another point I wanted to add was a very scholarly Indian who came to California, जिसको मैं काफी follow करता हूँ, साई दीपक, Supreme Court का lawyer. So he had addressed 2 conferences, one at Stanford and another at Berkeley, to the students, Indian American diaspora और mostly student. उसने भी यही बोला कि STEM में बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में इंडियंस लोग बहुत इन्वेस्ट कर लिए, सारे कंपनीज के सीईओ हम लोग बन गए, राइट. वी हैव प्रूवन, हम लोग ने वहां पे एकदम टॉप मोस्ट झंडा गाड़ दिया. द एरिया वेयर इंडियन अमेरिकन्स हैज टू एंटर इज द ह्यूमैनिटी साइड. और ये मैं 3 साल पहले जो हम सुधांशु जी आए थे एक जूम कॉल पे, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो इन्वेस्टमेंट है, अभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई चेयर हार्वर्ड में स्पॉन्सर करते हो तो वी शुड हैव अ चेयर फॉर ह्यूमैनिटीज, जहाँ पे आपके धार्मिक वे को पढ़ाया जाए, सनातन. ये सारा लड़ाई जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई है. तो मैंने जो रीड किया फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका का बहुत क्रिस्टल क्लियर है, एंग्लो सैक्सन सोसाइटी, और उनका सारा रूल्स एकदम डिफाइंड है, टूल्स डिफाइंड है. कोई वहां पे कांग्रेस और बीजेपी आके चेंज नहीं कर सकती है, सब डिफाइंड है. अनलेस एंड अनटिल हम इंडियन अमेरिकन ह्यूमैनिटी में जाएंगे एंड वी स्टार्ट प्लेइंग गेम और पेपर और चेंज करेंगे आइडियाज को, तब तक तो वी विल बी लाइक दिस. वी हैव गाइज लाइक प्रमिला जयपाल जी एंड रोक खन्ना, जो स्ट्रेट अवे अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए अपना दे कीप ऑन चेंजिंग, दे बेसिकली थाली के बैगन. रोक खन्ना इज द बिगेस्ट बैगन एवर प्रोड्यूस्ड बाय मैनकाइंड. वो रोज बदलता है, वो कभी पाकिस्तान के कॉकस तक चला जाता है. तो दिस इज वेयर वी आर एंड वी विल हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग जब तक कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन इन सारे आईवी में, ये जो येल और हार्वर्ड, बेसिकली फोकस भी एकदम 3-4 इंस्टीट्यूट में कीजिए. सारे ये जो विक्टोरिया हुई, एंटनी हुआ, सभी लोग तो ब्रांडिंग वहीं से लेके आ रहे हैं. शी ऑल्सो वेंट टू येल. ये 2-3 जगह में ह्यूमैनिटीज में आप घुस के एंड यू हैव टू, दिस इज द फाइट ऑफ सनातन धार्मिक वे ऑफ सीइंग थिंग्स. हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के हम लोग आहत हो रहे हैं, बट हम ये नहीं सोच रहे कि हम वो स्क्रिप्चर्स को यहाँ पे कैसे इनके सिस्टम में डालें. That is where we have to work rather than getting hurt and
और ये लड़ाई ऐसा नहीं कि डिप्रेसिंग, हम लोग जीतेंगे ये लड़ाई, धर्म की हमेशा विजय होगी। यस तेज कपूर जी। वो जो संक्रांत जी ने जो बात बोली थी ना, मैं उस पे बात करना चाहता था कि मैं अक्सर इसके बारे में बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट आई कॉल द राइटियसनेस फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट ऊपर रख दो और वो बोलोगे दैट इज इनफैलिबल, दैट इज वेयर द ट्रूथ एंड justified morality comes from, and then a submission to that is the only way that you can get that imputed righteousness. So ये framework उनके साथ like हमेशा रहा है, and ये जो control का जो mechanism है, like this has gone on for a long time now. And अगर हम देखें right, लाइक इस समय जो कंट्रोल है ना, मैं रॉकेफेलर का देख रहा था, लाइक उसकी लाइफ स्टोरी, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ही एक्चुअली वेंट अबाउट. नाउ दैट गाय हैड स्टार्टेड विद स्टैंडर्ड ऑयल. उसने कहा मैं ऑयल को डिग नहीं करूंगा, ऑयल को रिफाइन करूंगा, विच इज मोर प्रॉफिटेबल. तो उसने वो किया और धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑयल को बढ़ाना शुरू किया. एक टाइम आ गया जब स्टैंडर्ड ऑयल सारे के सारे जो ऑयल कंपनी थी उसको खरीद रहा था. सिर्फ आई थिंक 90% ऑफ ऑल द ऑयल रिफाइंड इन द यूएस वाज एक्चुअली फ्रॉम बाय स्टैंडर्ड ऑयल. एक ऐसा टाइम आ गया जब सिर्फ 5% ऐसे रह गए थे लाइक ऑयल रिफाइनरीज जो उसने नहीं खरीदी थी. उनको तोड़ने के लिए वो कई बार प्राइसेस को 80% गिरा देता था. इस तरह से उसने अपनी वेल्थ ऑलमोस्ट एक्चुअली मोर देन $400 billion की, विच इज फार मोर देन एनीबडी हैज एवर हैड. लाइक दैट्स व्हाट दे से. स्टैंडर्ड ऑयल कहते हैं एक टाइम पे $1 trillion की हो गई थी. This guy was not satisfied with that, so he actually started another campaign of taking over the entire medicine. पूरा एलोपैथी का जो वर्चस्व जो है वो रॉकेफेलर ने एस्टैब्लिश किया. एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे, एंड विद दैट ही डिस्ट्रॉयड होम्योपैथी, लाइक नेटिव alternative medicines and everything else, and everything was called quackery. He established that allopathy as the only medicine which was worth following. And बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, but 99% of the feedstock for allopathy, like allopathic medicines, whether it is ibuprofen, anacin, anything, comes from actually crude oil, from petroleum. So that became the basis of the entire medicine. जितने gels हैं, जितनी हमारी medicines हैं, analgesics, antihistamines, everything is based, feedstock is based on the petroleum. So that became the basis for everything that was happening after that. And suddenly the West took over and destroyed each and everything. जितनी सदियों की जो था, जो नॉलेज थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि द मेटाफर फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन बिकेम लीचिंग, ब्लड लेटिंग. जो वो बेवकूफ जो यूरोपियंस थे ड्यूरिंग द डार्क एजेस वो किया करते थे. उनको कोई अकल थी नहीं. उन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, रोमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर चुके थे. उनके पास कोई नॉलेज बची नहीं थी, वो ऐसी हरकतें करते थे. That was the metaphor that they used for every alternative medicine, and they destroyed it. So this is how they go about now. And then Rockefeller Foundation and Ford Foundation also invested in Green Revolution. Now Green Revolution became, so health and food have always been the control mechanisms, right? And then like once the green revolution happened, सोचो क्या brilliant mechanism था ये, कि आप वो बोलो like इससे ज्यादा food पैदा होता है, वो improved seeds, fertilizer and pesticides दो,
वो कोई बना नहीं सकता। लाइक उस समय सब कुछ वेस्ट से आता था। उन्होंने उन्होंने बेचना शुरू किया। उनके खरीदने के लिए वो लोन देते थे वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वंस एक बार लोन शुरू हो गए तो एक वो स्पाइरल में फंस जाते थे। एंड देन दे यूज्ड टू स्पॉन्सर थ्रू डेमोक्रेसी प्रमोशन, हैव करप्ट लीडर्स देयर, जो अपना वो फायदा बीच में से निकालते थे लोन्स ले लेके, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ऐसे बाकी जगह भी होता है। यहाँ इंडिया में भी बहुत हुआ था, लेकिन इंडिया में अब तक वैसे ही चलता आ रहा था। तो एक तरह का स्पाइरल सेट हो जाता था, ना आप बाहर निकल सकते थे, आप लोन लेते रहोगे। और उस लोन, और एक टाइम ऐसा आया था जब लोन सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए लेते थे आप। तो उस पॉइंट पे आके your entire national security was being dictated by the Western countries and organizations. So all ये philanthropic जो organizations है ना, जो हमेशा बनी रही हैं, ये हमेशा they were the fronts, like Sankrant ji and Vibhuti ji were saying, they were always been the fronts for something very sinister that was happening at the background. And this is because they always need a Jesus to control, like the church always did. So basically एक shiny, एक harmless, innocuous type of एक बंदा वहां लगा दो, एक ऑब्जेक्ट बना दो, और फिर एक बाइबल रख दो जो कि चार्टर है, UN चार्टर है, UN लॉज हैं, लाइक WTA के रूल्स हैं, WHO के रूल्स हैं, and then you have to like start following that, and that becomes the basis for everything. So this is a control mechanism that has gone on. अगर आप फूड और हेल्थ को कंट्रोल करोगे, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, and that is what is going on here right now, right? इनफैक्ट जो नेटिव अमेरिकन को जब खत्म किया, वो भी एक ये फूड एंड हेल्थ के बेसिस पे उन्होंने मारना शुरू किया था उनको। स्टॉप देयर फूड, स्टॉप देयर मेडिसिन, रिजर्वेशन में, और आज भी उनको वोटिंग राइट्स पूरी तरह नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी यहाँ पे एक तरीके से अमेरिका का अभी चैलेंज हो रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, हर जगह हो रहा है, इवन दो द स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप, एवरीथिंग इज गोइंग अप। तो रिपोर्ट में दिखा सकते हैं कि इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इकोनॉमी इज टोटली डिफरेंट। और Monro Doctrine, do you think that is going to affect the entire South America in a big way? Because एशिया की तरफ से उनको चैलेंज बहुत मिल रहा है, and we see that how the Red Sea is being attacked by Houthis. So what do you see, Vibhuti ji? And then everyone can contribute there. हम लोगों ने डॉक्ट्रिन की तो बात चर्चाएं बहुत कर ली हैं, देश जी ने भी बताया, like I always say कि control and domination through narrative building, जैसे संक्रांत जी ने कहा, it was very good. That is the way it operates. अगर हमें कुछ करना है तो उसको जस्टिफाई करो पहले। लेकिन उसके पहले मैं जाऊं, उसमें दो चीजें कहनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहनी थी कि मेडिसिन जो था ना, एलोपैथिक मेडिकेशन इज नथिंग एल्स बट पेन मैनेजमेंट सिस्टम। आपको कहीं दर्द है, ये दवाई खा लो, दर्द निकल गया। क्योर वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। तो आप एलोपैथिक मेडिसिन की एक बात देखेंगे कि अगर आपने लेना शुरू किया, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे डायबिटीज का हो, ब्लड प्रेशर का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो, आपको आजन्म लेना पड़ेगा एक बार आपने लेना शुरू किया। इट डजंट क्योर द प्रॉब्लम। Whereas Ayurveda was about wellness. Huge difference. So as you rightly said, they had to completely decry that narrative कि हमारा जो system था वो बेकार था। Another part, it's called an industry. Pharmaceutical is called an industry. That's why there is profit making. हमारे वैद्य लोग profit making में नहीं थे. They were for cure. There were wellness. There was affordability. So that's why the Ayurvedic medications they have no side effects. So they have, वो अमीर डॉक्टर नहीं होते थे वैद्य लोग। So that's how it is important how the narrative was built and destroyed. संक्रांत जी चले गए हैं, लेकिन that is very important. एक बात और भी कहनी थी, जैसे शरद जी ने कहा था, there is hope. I'll tell you why. I'm very proud of my involvement in that entire thing. It started last year when we met in Jaisalmer, a group of people, there were 40 of us there. So we have established a thing called an identity called United Council of Ancient Wisdom, UCAW. I will share some of the stuff that we have done, is to establish the ancient Indic wisdom
into modern management practices. By the way, believe it or not, we have 3 or 4 IIM directors who are part of this organization. There are people from the top-notch corporate world, very senior work people who are working in there. And we are trying to create the short-term, medium-term, and long-term assimilation of ancient wisdom into modern management practices, applying the sports analogy, whether you are playing T20, 50 over game, or a 5-day test match. We are doing that. And we are enrolling those corporates. Where will these methods work? In what scenario? So if you are suffering from diarrhea, at that time, wellness will not work. At that time, Imodium is required. So let's kind of agree, in strategically speaking and a thoughtful way, where the wisdom can be used. That is what is there. So this is something which is a great thing I'm talking about. The other part, Vivek Ramaswamy ki charcha hui thi. By the way, I came to know that Vivek Ramaswamy was supposed to give the Biden Republican Party rebuttal to President's State of the Union. McConnell did not allow him. Senator McConnell did not allow him to do that because he knew that this guy will demolish Biden's presentation because this man has acceptance around the world in the country. That's why he chose a completely unknown lady from, I don't know whether Arizona or wherever, who really messed up because I watched that. There is a tricky game going on here. So the other part is very important. Let's admit one thing, Monro Doctrine or whatever jo Aditya ji keh rahe the, West will continue to dominate the narrative war and the push towards whatever they want to achieve. That's why in Tucker Carlson interview, Putin had made a statement, I can't fight the Western media because you guys control the entire media. You control the narrative war. That's what is important. That's what is important for us to remember. Whoever we know how the Indian media is controlled by several NGOs and several investors who parrot the narrative of the West. So think about it. 2 days ago, Pew Research commented upon Modi's strong nationalism as the reason for his upcoming victory, rating him at 79%. Rahul Gandhi was rated at 62%. My question was, you can say what you like. Why are we accepting a Pew Research? This is how they interfere and come into your bloodstream through some narrative building in which they will rate, oh, Modi is like this, Rahul is like this, and then we swallow it. Shame on us. I would say, Pew, you are a very reputed organization, but stay out of my life. We need not even talk about that because Pew has no ability to talk about, but they have established a credibility. Pew is like a credible research institution, but do they need to comment upon what the Indians think about the leadership part of it? It's for us to say no. That's what I believe. Maybe a Drishtikon should do a commentary of that kind. Maybe Sharad Mohanji will write a book on that. Maybe Aditya Sanghi and we all do a program as to what kind of a leader India needs. It's not for Pew to decide or to comment, because I know one thing for sure, that come closer to election, the same institution, publication that is rating Modi at 78% will bring him down to 72% or 74%. Then we'll say, oh, aaj tak to humne inko mana aur aaj bhi manna padega. Think how the mind games are played. So, as I always say, that knowledge, if it is not translated towards an actionable way to do something, we will run into trouble again. His election is only 2 months away. And Rahul Gandhi is still talking about caste-based census. Shame on him. And I do not know how people will still vote for that party that has systematically exploited the Muslims, every other category of people for their own benefit. So I would put it that way, is that, Western narrative जो भी हो, हम इंडिया को अपना narrative बचाना है. अब आप जानते हैं सब कुछ. As I always say, knowing what we know, what are we going to do next? That is the key element. एक्चुअली एक बड़ा रूसी रिपोर्ट के बारे में भी देश कपूर जी थोड़ा शेयर करिएगा, शरद जी भी.
और एक अच्छा सा एक आर्टिकल है, एक जो है पब्लिश हुआ था यस्टरडे बाय द datapandas.org, और उसने कुछ रेप स्टेटिस्टिक्स किया था, जिसको आई टोटली शुड नॉट इवन डिस्कस इट, बट जनरली टू जस्ट लेट द व्यूअर्स नो। तो अमेरिका जो होता है, माना जाता है टॉप 13 हाईएस्ट रेप कंट्रीज, अमेरिका, यूएसए, और इंडिया का नंबर है 95 पर 100,000 women. But the game that they play is that they show India in absolute numbers, not in percentages. And they show because their population is less. And for as far as Western countries go, they show their numbers in percentages. ऐसा दिखाते हैं. And then that's how they compare. And they spread the rumor, bad rumor. So India is one of the, in terms of the rape in any way is not condonable. We have to punish with the highest possible punishment. At the same time, this is Western propaganda goes on to affect investments in India. So India, China, and this report was published through Japan, not through anywhere else, through Japan. So it's very carefully crafted strategy. So Sharad ji, please रूसी रिपोर्ट और इस पे थोड़ा कमेंट करिए प्यू रिसर्च पे, एंड देन देश कपूर जी. राइट, तो बहुत सा टॉपिक है, तो मैं सबका एक लाइन बोलता हूँ. तो मनरो रिपोर्ट आपने बोला, तो मनरो रिपोर्ट डॉक्ट्रिन, doctrine. So Monro Doctrine was actually named after the fifth American president James Monroe. और ये जो डॉक्ट्रिन है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्बिज पढ़ेंगे तो बहुत ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट बेसिकली सेज दैट यूरोपियन कॉलोनिज्म जो वेस्ट वर्ल्ड में है, स्पेशली इन साउथ में है, विच इज अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस, उसका अमेरिका विरोध करती है एज अ सेंट्रल पॉलिसी. सो इट लुक्स सो गुड, राइट? पढ़ने में कितना अच्छा लगा. और खुद ही यूरोपियंस है. well, as an Indian American, I like this idea. इसको एकदम with proper spirit इसको implement करना चाहिए. So this idea is good. This idea will be only implemented if Donald Trump comes back. That's where he was cutting the NATO influence and all the other things. Even Vivek Ramaswamy and the Republican candidate Donald Trump said that the Ukraine and Russia war को हम लोग 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं. There is certain give and take because they know the levers कहाँ पे पुल करना है, और अपना भी उनको पता है. So that was about that doctrine. विभूति जी ने प्यू रिसर्च का बोला. विभूति जी, आई टोटली एग्री विथ यू, एंड इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैं यही बोल रहा हूँ कि स्टेम में बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया, ह्यूमैनिटीज में करिए. आपका जेएनयू अभी भी इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट होकर भी वो प्यू टाइप का रिसर्च नहीं देता. इनफैक्ट मैं अपनी जो लास्ट बुक है जो पीछे दिख रही है, महादेव एंड कृष्णा, इसमें मैं भी इन्फ्लुएंस होकर उनका एक रिपोर्ट, एक छोटा सा पार्ट डाला जिसमें लिखा है कि भैया हमारे भगवान में महादेव को कितने % लोग चाहते हैं, कृष्ण को कितने % चाहते हैं, बताइए. ये एक क्रिश्चियन मुझे बता रहा है, और मैं भी इन्फ्लुएंस होकर ये लिखा. तो देखिए कि कितने अंदर तक वो घुस गए हैं, राइट? वो हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे किस रीजन में कौन से भगवान को अधिक पूजा करते हैं. सी कितना स्मार्ट वे है डिवाइड करने का, सेक्टेरियन बेसिस पे. तो उसका एक ही काट हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटीज में, आपके हार्वर्ड और येल में घुसना ही पड़ेगा, और वहां पे प्रोफेसर बनना पड़ेगा, और धार्मिक वे में सोचना पड़ेगा. एक और बढ़िया बात विभूति जी ने बोला कि अबाउट मेडिसिन एंड देश जी ने भी काफी डिटेल में बात की एलोपैथी पे. मेरे घर में तो 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं. मेरे छोटा भाई डॉक्टर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, मेरी बहन के हस्बैंड डॉक्टर हैं. तो वी ऑलवेज हैव दिस डिस्कशन, एलोपैथी वर्सेस इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है. देखिए, द वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस अपने चंद्रचूड़ जी, हार्वर्ड के पढ़े हुए, कितने आराम से एवरी नाउ एंड देन दे कीप ऑन बीटिंग बाबा रामदेव फॉर हिज ऑल्टरनेट मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग. और अब हम अमेरिका में जब देखते हैं, जब भी यहाँ टीवी खोलेंगे तो 80% ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज अबाउट द मेडिसिन सेलिंग, राइट? चाहे वो एलर्जी का सीजन हो तो एलर्जी बेचने लगेंगे. इनके 50% नॉर्मल टीवी पे ये एड जो आता है, ये मेडिसिन रिलेटेड आता है. क्या यहाँ एथिक्स नहीं है? यहाँ पे ये नहीं है? डू यू थिंक कि जितना भी वो एड में दिखाते हैं सब सही है? तो
जब तक नहीं हम ह्यूमैनिटीज को अपने अंदर में कंट्रोल में लेंगे, तो हमारे पास चंद्रचूड़ जी जैसे और जितने भी जजेस हैं, वो हमेशा वेस्टर्न नैरेटिव को बेचेंगे और रामदेव जैसे लोगों को हमेशा पीटते रहेंगे. दिस विल नॉट चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, राइट. उसके बाद ये हो गया. आदित्य जी, और क्या एक विषय था, कुछ पॉइंट आप बोले थे. रूसी रिपोर्ट रूसी रिपोर्ट. रूसी RUSI. रिपोर्ट. Okay, उससे मेरा अध्ययन नहीं था. I'll pass it to the others to speak. So Monro report मैंने कवर कर लिया. और regarding the foreign policy of US, देखिए जयशंकर जी ने अभी बहुत recently, हाँ, जापान वाला इशू, जापान को इन्होंने यूज किया प्यू रिसोर्ट में. हाँ. So, friends, day before yesterday, Mr. Jaishankar was in Japan, and he was literally, I could hear his statement. He was very angry with the way Japanese have shown the cold shoulder after जो हमारे एक फ्रेंड थे, जिनका डेथ हो गया जापानीज प्रेसिडेंट का. उसके बाद का जो जापानीज लीडरशिप है और उनका ओवरऑल जो थिंक टैंक है, अभी भी वो पूरे अमेरिका से डिक्टेट होते हैं. एंड बिकॉज इंडिया हैज टेकन स्टैंड, नॉट टेकन स्टैंड जो वेस्ट को पसंद है इन द रशिया यूक्रेन वॉर, जापान को बहुत स्मार्टली यूज किया जा रहा है टू वो इंडिफरेंट रोल प्ले कर रहा है. तो जयशंकर जी ने कल जापानीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठकर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जब वर्ल्ड में सभी लोग इंडिया की ओर आ रहे हैं, हम जो है अब ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली हमारा वे ऑफ थिंकिंग और हमारा जो असर्शन है वो अलग होगा. वी आर नॉट अ सेम कंट्री. आप उसको नोट नहीं ले रहे हैं. सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट अगर किसी बिजनेस कम्युनिटी का है कंट्री वाइज, तो वो है जापान. ही वाज सरप्राइज कि जापान और सिंगापुर ने इंडिया में अभी तक वो लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो इवन चाइना भी कर रहा है. तो ही सेड कि तुमको जब चाइनीज एग्रेशन से प्रॉब्लम होता है, तो तुम इंडो पैसिफिक और ये सब की बात करते हो, एंड यू ऑलवेज यू आर इतने इंपॉर्टेंट कंट्री होके तुम इंडिया में तुम्हारा जीरो इन्वेस्टमेंट है. देयर इज लिटरली नो, कोई डेलीगेट भी नहीं आ रहा है टू नो कि इंडिया के चेंजिंग इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है. ही वाज वेरी ब्लंट. आप उसका सुनिए कल परसों का. ही उनके बगल में बैठा के उसने ही केप्ट ऑन, अपने ससुराल में थे तो उनको हक है एज अ दामाद वो बोल सकते हैं, लेकिन ही रियली वाज वेरी वेरी एंग्री, एंड ही शोड द जापानीज द मिरर. जापानीज, सिंगापुर, ये जो एशियन हैं, ये लोग 4-5 लोग जो स्ट्रेट अवे अमेरिका का वो सब लेते हैं डायरेक्शन, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू इंडिया. और लास्टली जयशंकर जी ने बोला कि इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका अभी सीख रहा है एलआई के साथ कैसे, बड़ा अच्छा उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि अमेरिका इज लर्निंग हाउ टू, माने वो अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहा है to go with, because America was such a strong power, one sided, जो बोलता था वो होता था, economy was booming. अब उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है to take so many new players. और लास्टली अगर वो चाइना से अगर वो उसको कभी भी जीतना है, तो वो अकेले तो जीत नहीं सकता है. ये तो अब हो गया. दूसरा है कि वो रशिया और चाइना के नेक्सस को तोड़ भी नहीं सकता है. इट्स गॉन बियॉन्ड द डैमेज. बहुत सैंक्शन लगा दिया रशिया पे, इट डिडंट वर्क आउट. एकमात्र बड़ा पावर है इंडिया. इंडिया को अभी भी ये लोग वही उनका जो फॉरेन पॉलिसी है और कॉलोनियल एंगल है, उसी एंगल से ही देख रहा है. तो and India has started playing. So 2024 to 2029 I'll see इधर हम लोग अमेरिका से पूरे अलाइन होंगे. हम लोग अब मिडिल पाथ नहीं लेंगे इन 5 years में. I think कि by 27 और 28 India will take stand either way. इंडिया बीच का थाली का बैगन नहीं रहेगा. नहीं रहेगा. And this is where I feel and lot of people feel कि 24 में मोदी जी के जीतने के बाद 27 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसमें 400 सीट्स नहीं आती है, अगेन मेरा और बहुत लोगों का ऐसा अजम्पशन और प्रेडिक्शन है, तो गवर्नमेंट डिसमिस करेगी ये करंट पार्लियामेंट को, और 27 में मिड इलेक्शन होगा जिसमें 400 के लिए जाया जाएगा, ताकि इंडिया में जज खुद को जज नहीं नियुक्त करे. वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है जहां पे जज खुद को जज बनाते हैं इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. तो ये एक बहुत ही पिक्यूलियर देश है, और जब तक नहीं 2/3 मेजॉरिटी होगा, जो कि 27 में
the number of parliamentary seats will go from 543 to 700 something because उस समय delimitation भी आ रहा है. A state like Bihar with 14 crore विभूति जी आपके लिए, state like बिहार में 14 करोड़ population में 40 MP हैं, और state like तमिलनाडु जहाँ पे 7.5 करोड़ population है, वहां पे 40 MP हैं. आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो पीपल टॉक अबाउट रेवेन्यू शेयरिंग ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैसे आपके पावर को लिया जा रहा है. आप 14 करोड़ में 40, वो 7 करोड़ में 40 MP इन पॉलिसी मेकिंग. तो ये सारे को फिक्स करना होगा 27 में, एंड दिस इज वेयर द मैसिव रीसेट इज कमिंग. दैट विल बी माय अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेटमेंट. थैंक यू. देश कपूर जी. वो रूसी रिपोर्ट, वो मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, मैंने पढ़ा नहीं था उसके बारे में क्वाइट ऑनेस्टली, बट आई थिंक लाइक इफ आई रियली लुक एट इट, आई थिंक लाइक ब्रॉडली जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन में और इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनके आर्म्ड फोर्सेस में और उनको बैकअप नहीं किया तो रशिया जीत सकता है. मैं वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, राइट. कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि whether it's EU, whether it's Estonia, which was very, very close to, like it was part of the Soviet Union, and it is, they understand how the Russians think, or whether it's Germany, or whether it's US, everybody right now. मैं सिर्फ इसलिए हंस रहा हूँ, उस्ताद टिटुद्दीन खान चंचड़ नाम पे हंस रहा हूँ. एक क्वेश्चन विभूति जी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज कंटिन्यू. तो ये सारे लोग जो है ना, ये वॉर की तैयारी में लगे हैं. मतलब हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि जर्मन एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर आया था जिससे पता चला था कि जर्मनी हैज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि वॉर जो है रशिया के साथ कैसे चलेगी. So, and already Japan is was planning to invest $300 billion. Germany increase कर रहा है to 3.5% of its GDP. Sweden has joined NATO, like अपने आप को बचाने के लिए. Sorry देश कपूर जी, 400 लोग देख रहे हैं. जल्दी लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, so that you see this content, and put all notifications on so that you see our content whenever we go live. Please continue. Absolutely. So अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं उनके काम को अगर मैं देखूं, वो क्या कर रहे हैं, स्टेप्स जो वो ले रहे हैं, अगर मैं उसको देखूं तो ये साफ जाहिर है कि ये लोग तैयारी में, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट Russia has a strong hand over in this the entire conflict. And इनके हिसाब से अगर ये रशिया जीत जाता है तो रशिया will have a control over the Arctic region, which it definitely would. Arctic region is going to be the next battlefield for the West and the world, because whether it's minerals, whether it is trade routes, that will be the main area. So ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है. यूक्रेन तो बेचारा एक प्यादा है जिसके कंधे पे बंदूक रख के वो रशिया के ऊपर चला रहे हैं. तो ये लड़ाई उस चीज के लिए. तो अगर मैं वो रूसी रिपोर्ट अगर मैंने नहीं भी पढ़ी और अगर मैं उनके एक्शंस को देखूं तो मुझे लगता है कि irrespective of what they say, the writing on the wall in their eyes is very, very clear. So ये एक वो है बड़ा क्लियर. और खैर मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में तो आई थिंक सबने बहुत अच्छे से बोल दिया. उसके बारे में तो और कुछ है नहीं बोलने के लिए. बाकी अगर आप मोदी जी के इलेक्शंस के बारे में जैसे बोला शरद जी ने, तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो, और विभूति जी ने बोला अबाउट द प्यूर रिपोर्ट, द प्यूर रिसर्च रिपोर्ट. सी द थिंग इज, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बाहर जितना भी इन्होंने कोशिश कर ली
इन्फ्लुएंस करने की ऑन the narrative, the outside narrative. Internal to India, what really matters is the things on the ground and the internal narrative. उसमें मोदी जी का कोई वो नहीं है, मात नहीं है, because nobody comes even close to him. On the ground, he is playing a ground game which is very, very tough to beat, whether in terms of breaking the opposition, whether it is in terms of getting the right narrative across, whether it is in terms of opening new regions up. Tamil Nadu will completely surprise and shock people when the results finally come. So things are like moving in a direction. वो वहाँ बिहार में तो हम सबको पता है नीतीश कुमार जी का टर्न अराउंड हो गया. वो हर जगह पे ये ग्राउंड गेम जो है उनकी अनपैरेलल्ड है. तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि इनका मोदी जी को हराना इतना आसान रहेगा. द ओनली स्पैनर इन द वर्क्स दैट आई एम वरिड अबाउट इज लाइक you were suggesting about Sharad ji about the lawyers, the judiciary. अभी जब इलेक्शन कमिश्नर वो जो अरुण गोयल है उन्होंने he has resigned. I don't know why, because he could have gone until 2027 and he would have become the chief election commissioner. If he has resigned and there's only one chief election commissioner left, then the path for the Supreme Court to intervene into elections becomes that much more easier. And that is what I'm most worried about, because that is, see, चाहे ये यूक्रेन हो, चाहे even America ho, the way they intervene is through elections, because that is where everything counts. The counting के अंदर like that is where they actually intervene, irrespective of किसने क्या डाला क्या नहीं डाला. And that is what I'm most worried about. अगर तो if like Modi ji can take care of that, then I think we should be fine and we would go over 400. But this election commissioner ki fight, like Sharad ji you were saying, will become the fight between executive and judiciary before the elections. So एक क्वेश्चन है and the people who are very good questions people are asking, और नाम सुन के तो मुझे बहुत हंसी आ रही है. इसका नाम अगर कोई पढ़ेगा तो मजा आएगा सबको. तो प्लीज ध्यान से देखिए. लुची अल्बानो It's like a Sunday morning entertainment. Okay. अच्छा, एक क्वेश्चन विभूति जी के लिए खास कि उस्ताद तुजुद्दीन खान चंचड़ से आया है. And he's asking, do you think Modi government is doing enough to counter West when they use as a weapon against India? Why do some analysts still accuse the Modi government of being soft on them? But anyway, इसका थोड़ा सा पार्ट देश कपूर जी ने भी कवर किया है. Yes, please go ahead. So before विभूति जी के क्वेश्चन का आंसर दे, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ. देश जी जो इलेक्शन कमीशन के जो गोयल जी गए, he is not a मेन कमिश्नर, राइट. वो उनके ऊपर एक बॉस हैं, और ये ऑब्वियसली 27 तक रह सकते थे. मुझे लगता है, अगेन ये अभी जस्ट फ्रेश है तो अभी ज्यादा नहीं कह सकते हैं. मुझे लगता है कि गोयल जी चूंकि पंजाब से आते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट का ये थिंकिंग हो कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हों आपके द्वारा, बिकॉज आप जो है बहुत एक्टिविस्ट पार्टी है और उनको पोस्ट रिटायरमेंट पंजाब में रहना है. तो आपने उनको बड़े सपने दिखाकर बिहाइंड द सीन इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, हो सकता, अगेन स्पेकुलेशन की दुनिया है, हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो और उनके बदले में एक रिप्लेसमेंट रिसोर्स आए. ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो ट्रिगर पॉइंट कि वो उनको हटाया जाए, राइट. तो अभी टाइम है, हो सकता है किसी और के लोग लेकर आए जो कि और प्रो हो. बट देखिए, जहां तक फेडरल इलेक्शन में चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस का है, तो कोर्ट उतने ही तक स्ट्रांग है जब तक गवर्नमेंट उसको स्पेस देती है. आप बंगाल में देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद
वो जो संदेश खाली का जो विलन है उसको 2.5 घंटे के बाद, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, 2.5 घंटे के बाद स्टेट पुलिस ने उसको हैंड ओवर किया, कुछ एक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट अगर चाह लेगी, वो अब बंगाल एक छोटा सा एग्जांपल है, गवर्नमेंट चाह लेगी तो कुछ नहीं कर सकती है आपकी जुडिशरी, बिकॉज उनके हाथ पैर पुलिस ही है। तो मोदी जी इज टेकिंग लॉ एट वेरी डिप्लोमेट, वेरी राइट स्टेप बाय अलाउइंग कोर्ट टू डू थिंग्स, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इतना इतना नहीं लेना चाहिए। जुडिशरी हैज, बिकॉज ये जुडिशरी जजेस कैन नॉट अपॉइंट जजेस। सालवे जी ने अभी आज ही बोला है कि एक स्पेशल एग्जाम्पल है इंडिया जहाँ पे जज को अपॉइंट करता है। विभूति जी सर नो प्रॉब्लम। ये जो सवाल है उस्ताद फिटरुद्दीन साहब, आप ये जयपुर डायलॉग पे भी आते हैं, सो आई एम परिचित विथ हिज नेम, वहाँ भी सवाल पूछते हैं। और whether Modi government is doing enough to counter West when they use Islam as a weapon against India, the answer would be very tough, yes and no. Because what is enough is from my point of view is enough, from your point of view it may not be enough. So that word is a tricky word, but what is important is to remember is that there is an established institution, what is known as the global Islamic elitist, Islamist, socialist, communists. इनका एक alliance है, which is known as the unholy alliance of the trio, where in the Jaipur dialogue we talk about the Panchamakars. देव जी ने वो phrase किया था. So they will keep pointing out, regardless of what you do, it's never enough. That's important. But what is being done, it's always the steps to be taken. But remember one thing more, very important, is the fact that the Islamic thing has been abused in India so seriously that people are playing the game. This is what is dangerous for people to do that. This is very, very dangerous to do that. You look at the prayers, Friday prayers. Why on the streets? Nobody's asking that question. That you can't stop them is the question. Nobody is even asking, because they have chosen violence as their tool of expression. So this is very important for people to kind of begin to take care of that. You know, what is important is, again, I agree with you, complacency नहीं आनी चाहिए भैया, ये बड़ा डेंजरस शब्द है। वो 400 सीट जीतेंगे तो आज हम वोट देना ना जाए, नहीं नहीं नहीं, ये आपको अब वोटिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड complacency की जरूरत नहीं है. A win is a win. I'm not even into favor of talking about 400 seats. I'm talking about, like, as a sportsman, I'll say I have to win by one stroke. If you're a golfer, you need one stroke to win the championship. If you're a tennis player, you need to win. By football player, you need to win one field goal is enough, or one goal is enough in soccer. But if you're down by 2, you have to score 3 to win. So I say complacency is not required. I'm saying win. That's important. Now votes don't matter. Put the other guy not in the chair. Throw him out. That's what is important to bear in mind. So yes, you are right. Complacency has no place for you and I, ordinary voter and ordinary Hindu, voter, recognize whether you are a Muslim or anybody else. Because I read an article yesterday that this time looks like the Muslims will overwhelmingly vote for Modi. Because अब सबको ये एहसास होने लगा है कि हमारे को बहुत उल्लू का पट्टा बनाया गया. हर एक community knows that Congress party has systematically used every single community against India. Nobody likes that badge. You took the example of golf, so I'll say I'll go for the eagle, not birdie. Correct, whatever. So Sharad ji, this question is also for you because आप active भी हैं काफी on election side. So complacency आपको दिखता है बीजेपी के ranks में, क्योंकि यही तो 2009 में हुआ था शाइनिंग इंडिया कैंपेन. बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन मोदी एंड अमित शाह के गवर्नमेंट में नॉट एट ऑल रेलेवेंट. उसका रीजन ये है कि शाइनिंग इंडिया, बीजेपी, ये लोग बार बार जो बोला जाता है, उसका मेरा 2 काउंटर है. पहला कि मोदी जी एंड अमित शाह, दे आर नॉट एलिटिस्ट लाइक वाजपेयी जी. इवन दो वाजपेयी जी प्रखंड विद्वान थे, लेकिन वो ग्रास रूट नहीं थे.
वो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन उनका हेल्थ, उनका वे ऑफ वर्किंग, वो गांव-गांव जाना, इतनी सभा करना, वो मोदी जी और उनमें वो स्टाइल का डिफरेंस है, राइट? और सो दैट इज वन। दूसरा है कि दैट अप्लाइज टू आडवाणी जी आल्सो। वेयरएज़ जो अमित शाह और मोदी हैं, जिस बूथ लेवल, पन्ना लेवल पे लोग काम करते हैं और इस तरह से मोटिवेट करते हैं, तो सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन उस समय का बीजेपी और अभी का। तो कॉम्प्लीमेंसी तो है ही नहीं। द वे दे आर, एक के बाद एक, देखिए इंडिया अलायंस पहले बना, ये लोग ने अपना टाइम का वेट किया, और जब एकदम राइट टाइम पे जब जब एकदम खाना खीर पकने लगा, दैट इज वेयर वो अब शुगर डालना शुरू किए, चाहे वो बिहार में अलाइनमेंट किया हो, यूपी में किया हो, आंध्रा में किया हो, चंद्रबाबू नायडू को वापस लाया है, अब अभी और भी कुछ बचा हुआ है, 2-4 जगह। सो आई गेस दैट इज वेयर यू नो, इनको तो वैसे नहीं देख सकते हैं, और ये लोग हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहे हैं। ये वाजपेयी जी और कोई भी ऐसा नहीं किया है। आई मीन कांग्रेस थोड़े समय में की थी जब अहमद पटेल जी थे, एंड सोनिया गांधी वाज यंग, एंड सोनिया गांधी इज नो मोर यंग। 2009 और 2004 की जो बातें करते हैं, तो उस समय सोनिया जी बहुत यंग थी, और बहुत एग्रेसिव थी, और अहमद पटेल जैसे एक उनके पास चाणक्य थे। तो अब वो सब नहीं है। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज कि उनका जो ब्रांड है, राहुल गांधी, अनफॉर्चुनेटली a hardworking guy with no orientation and worst advisor से घिरा हुआ है वो, so that is where he will not succeed. Yeah. एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन आया था। पहली बात तो मैं बोलता हूँ प्रकाश झा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ विभूति झा जी। अगर होंगे तो आई वेलकम हिम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, और दूसरा चीज ये है कि इंडिया में, यूएस में दर्शकों को समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो, एक मेंटल ओरिएंटेशन अलग है लेकिन पार्टी एक ही है। दोनों के दोनों चर्च जाते हैं, बट एक दिखाता है कि चर्च के अगेंस्ट है, दूसरा दिखाता है वो चर्च के साथ में है। तो लिबरल यहाँ पे मतलब होता है कि चर्च के नियमों के विरुद्ध काम करना, कंजर्वेटिव होता है चर्च के साथ काम करना। तो अगर कोई हिंदू अमेरिका में बोलता है अपने आप को हिंदू कंजर्वेटिव, तो वो महामूर्ख है वो, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आएगा। मतलब ही इज द मोस्ट फूलिश गाय हु सेज हिंदूज आर कंजर्वेटिव, क्योंकि हिंदूज डोंट बिलोंग टू ईदर ऑफ दिस कैटेगरीज बिकॉज दीज बिलोंग टू चर्च बेस्ड कैटेगरी। ओनली ए कन्वर्टेड इंडियन विल बी कॉल्ड इन ए कंजर्वेटिव हिंदू। वो हिंदू, कंजर्वेटिव हिंदू इज ऑक्सीमोरन। Hindus are neither conservative nor liberal. Hindus are dharmic. So we are neither left nor right. We are dharmic. So so if anyone says, including Vivek Ramaswamy, says he is a conservative, that means he doesn't know anything about himself or his religion or culture. So just stay away from those terms. We just say we are pro Constitution of America. That's it. We love Constitution of America. We stay with the Constitution of America, and that's what we are supposed to do. Our religion is a private matter in the United States, and people should stay away from any politics which talks about religion in United States. But Constitution is the sacrosanct here. So, विभूति जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ क्वेश्चन? नहीं, मैंने एक देखा था स्टेटमेंट, किसी ने कहा था कि विभूति जी बिहार के हैं लेकिन उनको हिंदी बोलने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा है भैया जी, बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। हमने तो अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में ही सीखी है। तो हम उस जमाने के बिहारी हैं जिस हम लोग हिंदी पास विदाउट इंग्लिश भी हुआ करता था। तो होता ये है कि पॉलिटिकल चर्चाओं में क्या होता है कि कभी कभी शब्दों का प्रयोग वो फटाफट याद नहीं आता, और दैट्स सिंपल सर एज दैट। सो और हम लोग जो हैं यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं भी बोलते हैं। समटाइम्स अमेरिका में कभी कभी कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट शब्दों को समझ आ जाए तो इसलिए अंग्रेजी का शब्द करते हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, टिप्पणी करनी थी और कुछ नहीं। अच्छा, और भी मैं क्लियर कर दूं कि शरद जी का बड़ा क्लियर व्यू है इस क्वेश्चन पे। एक्चुअली मुसलमान चाहे कितना भी हो, इन बीजेपी को वोट नहीं करने वाले। सो दैट आई थिंक दैट कैलकुलेशन नीड्स टू बी देयर, बट वी नेवर नो। सो इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा होगी तो सभी लोग सनातनी बनेंगे एंड दे विल वोट फॉर बीजेपी। सो मेरे को ऐसा लगता है। अरे भैया, वो तो था कि ओवैसी की वीडियो आई थी जिसमें कि वो शिव तांडव का नाच कर किया जा। आजकल डीप फेक्स का जमाना है। दर्शक watch our video on deep fakes which is coming tomorrow with Captain Agustin. So thank you all very much for joining. मुझे बहुत आनंद आया, आप सब लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। This is one of the most successful shows of D5
and that means there was a hunger for everybody missing this show. And I'm really thankful to Sharad Mohan ji, Bhuti ji, who made this show a success, Sankrant Sanu ji, and Dej Kapoor ji, because they always never refuse. They could because it's Sunday, but they did not. So, आदित्य और जी, आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना शो है और पर अपनों मालूम के है, लिए है, अपना शो है, अपनों के लिए है, इसलिए एक हमारी ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें हर तरह से। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। उस्ताद फखरुद्दीन खान चंचड़ का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज ऐसा लिखते रहिए। Adi, what about the comment that Muslims have colonized the Democrat Party? No, I don't think so. Democrat Party is a masterminds. They are masterminds in politics. वो यूज करते हैं और फटे हुए के जैसा, तो आप समझ सकते हैं, fill in the blanks. I don't use such words, but you can understand what I'm saying. तो वो उसको एक वैसे यूज करते हैं और they throw them out. So just अंडरस्टैंड दैट। तो ये लोग सब अपने आप को यूज होने देते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल कमी होती है, बिकॉज उनका दिमाग एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। सो डेमोक्रेट पार्टी इज टू स्मार्ट फॉर देम। वो अल्टीमेटली विक्टोरिया न्यूलैंड, हिलेरी क्लिंटन जैसे लोग ही प्रोड्यूस करती है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। और थैंक यू। और आस्क मोदी, वी टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। मुस्लिम वाले पे मैं भी एक लाइन बोली दूं, प्लीज जब आप प्लीज बोल रहे हैं प्लीज तो भाइयों और बहनों, हिंदी के भ्राताओं, जिशान अली जी, ब्रो नहीं ब्रदर बोलिए, भाई बोलिए, तो मुसलमान, ये जिशान अली जी और सारे हमारे खान भाइयों का पे भी प्रश्न है कि आप बीजेपी को क्यों नहीं वोट करते हैं? आप सेकुलर भारत में रहेंगे और आप एक ही पार्टी को वोट करेंगे, तो ये सेकुलरिज्म नहीं है। आपकी महिलाएं तो इस बार वोट करेंगी बीजेपी को, चाहे कितना भी इशू बनाइए। सो फ्रॉम कश्मीर, देखिए, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मुस्लिम मेल विल नॉट वोट फॉर बीजेपी। दक्षिण में तो कर्नाटका में नहीं करेंगे, वहां पे मेल एंड फीमेल दोनों नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया में और भी बहुत स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं, एंड कश्मीर से लेकर राजस्थान और बाकी सब एरियाज में देयर विल बी अ वोट ऑफ मुस्लिम राइट माइंडेड नेशनलिस्ट पीपल, जो कि बहुत कम होगा संख्या, लेकिन होगा, और महिलाओं का संख्या रिलेटिवली ज्यादा होगा। पोस्ट इलेक्शन विल सी दोस डेटा। सो विद दैट आई थिंक आई विल एंड। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय जय श्री जगन्नाथ, राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।